अस्सलामुअलैकुम। आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैंने कहा आपको मैंने कल वीडियो बनाई थी इसके बारे में अपडेट दे दूं, क्योंकि आज वीकली क्लोज हुआ है और जब वीकली क्लोज होता है तो दिस इज़ अ की टाइम टू अंडरस्टैंड द मार्केट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे वीकली कैंडल में है वो है ये वीकली क्लोज। और इफ़ यू नोटिस दैट वी बिन we close almost below that swing low on the index chart. Let's see if we close below it. That's the low, and the low is at what is the low? Low is 57,381, and this candle close is at 57,323. So kind of close below. So it's a marginal close, but it closed below. So, which I think that it's quite a bearish for me. So we got to be cautious, as we know that this is the breaker candle and this is the resistance, first resistance BTC has to deal with, and that is $59,500. And this is our second breaker, जो जिस breaker को मैं बहुत value देता हूँ. This is the low of the breaker. This is the high of the breaker. So we are still within that breaker. We are not yet close below that breaker. So we are still in that fighting zone where ना तो हम ये इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ना तो बुल्स ने अभी तक अपने आप को मनवाया है ना पेयर्स ने. This is the area that where I am interested to be longing or shorting, and this is the area where you must not take positions because you have to wait either for this region, either we have to wait for this on the weekly time frame to be potentially look for long, either we have to wait for this to be potential long. यानी $53,000 को रेजिस्टेंस बना दें और 58,000 9,000 को सपोर्ट बना दें. दिस इज वेयर यू मस्ट बी. इसे हम कह सकते हैं कंफर्टेबल लॉन्ग, या दिस एरिया इज अ लॉन्ग पोजीशन. पीपल आर ट्राइंग लॉन्ग. लेट्स सी हाउ द रिएक्शन. सो मैं एक चीज़ आपके साथ आज शेयर करूंगा जो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है रिवर्सल का, को शेयर करता हूँ बिकॉज इट्स ऑन द बाइनेंस चार्ट, और वो है बाइनेंस फंडिंग. आप ये नीचे चार्ट देख रहे हैं, ये बाइनेंस फंडिंग है. ये वीकली चार्ट पे है, ये 4D चार्ट के ऊपर है. ये जो फंडिंग है, इफ यू नोटिस और से इसको देखें, इट इज ग्रीन. फंडिंग का ग्रीन होना, ये जो फंडिंग है इसका ग्रीन होना इज द साइन ऑफ व्हाट इज द साइन. इसका ग्रीन होना ये साइन देता है कि मार्केट जो है वो supporting the longs. People are taking long entries more than shorts. Simple example. So, in my general opinion, so what is it is showing? अगर आप इसको और से देखें, सामने में ये बाइनेंस फंडिंग फ्री इंडिकेटर है. अगर आप गौर से देखें तो जब भी फंडिंग नेगेटिव हुई है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ लाइनें ऑन द डेली लगाता हूँ ताकि हमारे लिए स्ट्रक्चर. जब भी फंडिंग नेगेटिव हुई है, दैट वाज द टाइम फर्स्ट margin of this was the negative funding. And अगर हम starts negative funding, negative funding, negative funding, negative funding, whenever we saw consolidation of negative funding, this shows a good sign of buying, in my opinion. Whenever you see, for example, there is negative funding, so what I'm trying to tell you, negative funding shows the bottom is near. So if you buy in the negative funding range, मतलब इस region में अगर आप buying करें, so you can predict the shorts, you can predict the bottom. So still now अगर हम देखें तो BTC की funding negative नहीं हुई. So I would like to see a spike. So मेरा जो personal opinion ये है, the first place that BTC is going to to create a little bit problem is this breaker that we are facing now. This is the resistance, this is the high. We are in the breaker on the daily. अगर हम 4 hour पे जाएं तो it is kind of the same price that we are struggling to cope with this candle. So मेरे opinion मुताबिक that's the breaker almost this wick,
or even though this candle is a breaker or order block, so we are kind of facing that kind of an area. Maybe that was a great, जो मैं कल जिक्र कर रहा था अपनी वीडियो में कि what I was waiting to see is that we created a range here. That's the range, and हम range से नीचे like this is the deviation, and what we are going to do, we may go towards this high, okay, probably to the range high again. So we are struggling with the mid range. So अब हमें क्या चाहिए? What I think, I want this one to this area to hold the price, and then we expect the price to move to the upside. So this is the first sign. But as per my knowledge, I would like to see the price must break above this sloping trend line or this area of resistance and close above it and create some good move. Like, I would like to be very cautious to see this one to hold. Anyway, otherwise I still think, देखें अगर आप गौर करें, what happened is that price ने low sweep किया है. Actually that low was swept, and that's where the bounce. So lows has very important, so we swept the lows, and I would like to see more volume in the market, which is not yet up to my mark. तो मेरा जो कहने का मकसद ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं जब तक कि फंडिंग नेगेटिव नहीं देखूंगा, आई विल बी वेरी कॉशियस. बिकॉज अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मार्केट के अंदर एक मूव और है टू द अपसाइड, ओके, इफ वी आर इन स्टिल इन द बुल मार्केट, सो आई थिंक अगर ये लाइन ऑन द लॉग स्केल में ये टच हो जाती है, अगर यू गो टू द लॉग, इट इज टचिंग, but on the linear scale it is not touching. See, so there is, maybe we have an opportunity to another go to the downside and we wick into it. Like जैसे मैं जिस एरिया को, why I'm saying that there is a possibility, because on the monthly if you look at it, we are creating a candle which is not bullish candle, but we have that kind of monthly support here. This is the monthly support, monthly demand. So मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइस इस तरह की कैंडल के बाद हमें मंथली डिमांड में फिर जाती हुई नजर आए, प्रोबेबिलिटी, एंड देन वी गो अप. या फिर हम, अब देखना ये है कि प्राइस इधर स्टिल लाइक दिस कैंडल, इस कैंडल की तरह देयर इज अ प्रोबेबिलिटी हम मंथली डिमांड में जा सकते हैं. सो आई एम जस्ट कॉशियस कि जैसे कि देखिए हमारे पास ये दो कैंडलें हैं. एक कैंडल ये है, दिस कैंडल हैड वेंट इनटू दिस एरिया. सो एनीथिंग बिलो, इन माय पर्सनल ओपिनियन, मेरे मेरे जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक, देखें दिस इज द रेंज. सो एनीथिंग इनटू दिस एरिया, लाइक ये जो एरिया रेंज का, दिस एरिया, आई मीन इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस एरिया ऑफ द रेंज इज प्रीमियम. दिस इज प्रीमियम, this area is premium, and this is discount. This So these are the two areas. So अगर price, for example, from the range low to the range low, अगर हमें price इस एरिया से या इस मिड लाइन से, मिड रेंज से नीचे मिलती है, डिस्काउंटेड प्राइस है, इससे ऊपर जो प्राइस है वो प्रीमियम पे है, एक्सपेंसिव है. तो अगर आपने ट्रेडिंग की जो टर्मिनोलॉजी के मुताबिक समझना है और सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, सेफ बाइंग करनी, तो आई वुड लाइक टू बाय इन दिस रेंज, इन दिस एरिया, इस ब्लॉक में मैं बाय करूंगा. बिलो दिस वन इज अ डिस्काउंटेड प्राइस. और अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में कोई ऑर्डर ब्लॉक नजर आता है जैसे कि ये, तो यू मस्ट बाय इन दिस एरिया. तो आई थिंक एनीथिंग इनटू दिस 48 to $48,000, अगर प्राइस $48,000 पे आती है या $50,000 पे आती है, तो मोर लाइकली हमें क्या पता फंडिंग नेगेटिव मिले. क्योंकि आपने ये बात समझनी है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर तो ब्रेक किया हुआ है, मार्केट हैज ब्रोकन द स्ट्रक्चर, एंड ये मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ है, प्राइस उसी स्ट्रक्चर को स्ट्रगल कर रही है. और अगर गौर किया जाए तो मार्केट जो है वो एक वेज में है. सो इट इज़ प्रीटी बुलिश पैटर्न इन माय ओपिनियन. If you notice it, this is a bearish, this is a bullish pattern. Market is still creating a bullish move, still not looking as bearish as it looks. See, this is pretty decent in my opinion. We are still in a kind of a in a move, like it is a wedge kind of a pattern. So maybe it may have some more time
like next month we may have some more time हम करें बिकॉज इस तरह के पैटर्न हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि हमने हाई स्वीप किए हैं वी स्वेप्ट द हाई सो नॉर्मली जब हाई स्वेप्ट होता है तो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक्स की तरफ आती है देयर आर ऑर्डर ब्लॉक्स हेयर देयर आर ऑर्डर ब्लॉक्स हेयर सो सॉरी वी आर इन द ब्लॉक हेयर दिस इज द ब्रेकर एंड दैट्स द ऑर्डर ब्लॉक ये हमारा ब्रेकर था एंड दैट्स एन ऑर्डर ब्लॉक सो दोनों में से किसी एरिया पे भी बाउंस एक्सपेक्टेड है तो मैं कहूँगा कि स्टिल वी हैव सम वेज टू गो अनटिल अनलेस कि हम $59,000 को रिक्लेम नहीं कर लेते ऑन द वीकली स्केल तो वी कुड एक्सपेक्ट 50K का लेवल एंड 48K का लेवल सो डू नॉट बी सरप्राइज और फंडिंग नेगेटिव हो सकती है विच आई एक्सपेक्ट ऑन द बाइनेंस विच आई एक्सपेक्ट बाइनेंस का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है विच आई एक्सपेक्ट तो मैं उस सिनेरियो को प्ले आउट होता देख सकता हूँ तो हमें थोड़ा सा और पेशेंस दिखाना पड़ेगा थोड़ा वॉल्यूम का इंतजार करना पड़ेगा स्टिल मार्केट में नहीं आया और द कॉइन्स लाइक जैसे कि कॉइन्स ये लेस एल एस के कॉइन है आई थिंक मैंने कभी इस कॉइन के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं की लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा है एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड कॉइन द नेम ऑफ द कॉइन इज और ये न्यू वेरिएंट आ रहा है द नेम ऑफ द कॉइन इज लिस्ट कॉइन या दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई थिंक इस पे नज़र रखनी चाहिए अगर आप लोग किसी कॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं इस कॉइन के बारे में थोड़ा सा हूँ क्योंकि इसकी सप्लाई भी गुड है और एटलीस्ट ये बॉटम पे है और अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ें तो वी कैन फेस लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स अबाउट इट ओके so I was talking about list coin so this is the coin and this is the page of this coin so I would recommend you to read the page and look into this coin and let me know what you think of it because I think it is a very interesting project and it has the potential to create some because I feel like this chart telling me that this is creating kind of an accumulation range not showing any sort of weakness so it has the potential so keep an eye on this coin if you want to buy something that is kind of yeah $19 lots of things it could be a good big project I mean read about it I mean lots of things can happen because when I see this coin page it's very interesting so just read it and think about it read the load map so maybe it could be a project that give you 10x or 20x from here even because this chart is not bearish this chart looks good to me and on the weekly it's sort of an accumulation range kind of so these kind of project can surprise you because this lots of things are here anyway all the best